welcome back to my channel. I'm Anusha. Thanks for joining me. So today I'm gonna be showing you guys this classic glam look जो मैंने create किया है only 1000 में. So today I'll show you a highly requested video जो आप में से बहुत लोगों ने मुझे request किया है कि एक कम बजट में एक classic glam look दीजिए. So today I just created this look for you guys. I hope you will enjoy this video. Before starting this video, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So at first I'm using the Lacto Calamine daily face care lotion for oil balance. I'm using this as a moisturizer or as a primer. This is for sensitive skin, oily skin, like acne prone skin. So ये बहुत ही help करती है. And this is water based moisturizer. So I'm taking this quantity all over my face. So for foundation, today I'm using the Lakme Invisible Finish Foundation and my shade is 1 क्योंकि इसका सबसे लाइट शेड यही है. एंड लैक्मे के जितने सारे शेड्स है वो सारे के सारे इंडियन स्किन टोन के लिए बना गया है. इसको भी मैं थोड़ी सी शेक कर लूँगी. आई एम यूजिंग लिटिल क्वांटिटी. मैं इससे मेरी अंडर आई को भी कवर करूँगी थोड़ी सी. एंड लिटिल बिट ऑन माय eyelid. Now I'm blending this with my damp beauty blender. Now for concealer. अब इस रेंज में कंसीलर बहुत सारे तो मिलते हैं लेकिन मुझे चाहिए all in one palette. So today I'm using the ADS Ultimate Concealer and इसके अंदर बहुत सारे shades है. You can see contour shades है, यहाँ पे सारे concealers है. And this one is my most favorite. This is you can use as a highlighter or as a pressed glitter or any kind of thing you can use it. मैं आपको यूज़ करके ही बताऊंगी. So at first today I'm using the concealer shades and for that I'm using these shades and मैं ये इसको बहुत टाइम पे यूज़ करती हूँ. इसका प्राइस ही बहुत कम है. इतने कम प्राइस में मुझे इतने अच्छे पैलेट मिल गए हैं तो बहुत ही मैं सेटिस्फाइड हूँ इसको लेकर. And it's a cream based concealer, you can see. Now again I'm blending this with my damp beauty blender. Now for the contour shades, I'm using these two combination shades. Now set this all in place. मैं यूज़ कर रही हूँ ADS banana powder and my shade is yellow banana. So ये बहुत ही cheap है and ये मेरी बहुत ही favorite powder है. आप लोग शायद अगर मेरे चैनल पे है तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं इसको बहुत यूज़ किया है. First I'm moving on to the eyebrows. The Maybelline Fashion Brow and my shade is grey.
Now for the eye, I'm using the Lakme Kajal. So first मैं पूरे eyelid को इससे cover करूँगी. Now इसको मैं थोड़ी सी blend करूँगी मेरी crease को. मेरी जो एक्सेस पाउडर है उसको मैं रिमूव कर लूँगी इससे. Now for the kajal, I'm using the same Lakme kajal to my lower waterline. Now मेरी waterline को थोड़ी सी मैं smudge करूँगी इससे. For the mascara, I'm using the Gala mascara. Okay, now for the blush, I'm using this pink shade. Now for the lip, I'm using the NY lip crayon. So मैं इससे मेरी थोड़ी सी cheeks को थोड़ी सी पिंक करना चाहती हूँ. So I'm using the same lipstick. Okay, now for the highlighter, I'm using this shade. This shade, you can see, मैं आपको closer दिखा रही हूँ. So guys, this is the final look. I just love this look, guys. इतना smoky, like nude lips, and it's look like so classy. आप अगर इस look को try करेंगे तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये look मतलब only 1000 में ये, क्योंकि बहुत ही glamorous look है. आप ये look बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग मुझे ये look क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी. कम प्राइस में आप अगर इस स्मोकी लुक एक ग्लैमरस लुक देंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो गाइस, उन लोगों के लिए मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है. यू कैन सी इट्स सो गॉर्जियस एंड आई लव दिस लुक गाइस. If you guys enjoyed this video, then please hit the like button, and if this video is helpful for you, then please subscribe to my channel, which is down there, and please click the bell icon for instant notification. So guys, for now, bye.